एग्जामिनेशन अवेलेबल होना चाहिए, ट्रीटमेंट जो है इसका अवेलेबल होना चाहिए, देन उसका नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज कैन बी अंडरस्टूड। फिर उसका जो है द कॉस्ट ऑफ बेनिफिट ऑफ अर्ली डिटेक्शन should exceed the cost of risk. The benefit of early detection should exceed the risk and costs. So the benefit of early detection should exceed the risk and cost. The benefit of early detection it should exceed the risk and cost. The benefit of early detection should exceed the risk and cost, and there should be guidelines on who to be considered a patient. Therefore, there should be guidelines on who to be considered a patient and should have late or early asymptomatic stage होना चाहिए. The early detection and treatment should reduce the mortality और morbidity. Last में क्या होता है कि there is a test that can be detected prior to the onset of symptoms. So there should be a test that can detect the disease. And so there is a test that can detect the disease prior to the onset of signs and symptoms. So there is a test that can detect the disease prior to the onset of signs and symptoms. अपने नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम होना चाहिए, हाइपरडायग्नोस होना चाहिए, तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और एग्जामिनेशन अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए. फिर उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज कैन बी नोन. देन द बेनिफिट ऑफ द अर्ली डिटेक्शन शुड एक्सीड द कॉस्ट एंड रिस्क, शुड एक्सीड द कॉस्ट एंड रिस्क. ठीक है. फिर उसके बाद जो है there should be guidelines on who to be considered a patient. There should be guidelines on who to be considered a patient. Early detection should reduce the morbidity and mortality, and it should have a recognizable late and early stage. So उसका recognizable late and early stage होना चाहिए. There is a test that can recognize the disease prior to the onset of signs and symptoms. ठीक है. onset of signs and symptoms important प्रॉब्लम होना चाहिए, हाइपरडायग्नोस होना चाहिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट और एग्जामिनेशन जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट होना चाहिए, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज कैन बी नोन. The benefit of early diagnosis should exceed the cost and the risk. फिर उसके बाद there should be guidelines on how to be considered a patient. It should have a late and early asymptomatic stage होना चाहिए. And then उसके बाद what will work is कैसे बोल रही हूँ मैं. It should be early diagnosis should be able to reduce the morbidity and mortality, and then उसके बाद there should be a test that can recognize the disease prior to the onset of signs and symptoms. मतलब prior to the onset of signs and symptoms जो है तो ये करना है. The criteria of diseases which needs to be screened, criteria of screening test which is acceptability है, acceptability, repeatability and validity accuracy. So acceptability is comforting test are not proven to be acceptable by the people पर प्रोडक्ट. क्यों? क्योंकि वो पेनफुल होते हैं, एम्बैरेसिंग होते हैं. अब रिपीटेबिलिटी क्या है? इट शुड बी एबल टू गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट्स व्हेन रिपीटेड मोर देन वन टाइम on the same individual under the same condition. Repeatability it should be able to give consistent result. Give consistent. It should be able to give consistent result when
repeated more than one time on the same individual under similar circumstances, same conditions, same conditions. तो इसको is also known as consistency, reproducibility, reliability, ability, and reorganized precision. Repeatability is about consistency, reproducibility, repeatability, reliability is precision. तो repeatable होना चाहिए, consistent होना चाहिए, reproducible होना चाहिए, reliable होना चाहिए, और precision. ठीक है. That is extent of variation, measurement of content behavior. Investigator knowledge is important. यहाँ पे investigator knowledge is important. Investigator knowledge is important because we know the observed variation, biological variation, and then there is technical errors due to technical error. तो देखो biological variation क्या होता है उसमें intrabiological सेम पर्सन जो है सेम इंडिविजुअल पर सेम टेस्ट अप्लाई कर रहा है तो उसमें जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं इस बायोलॉजिकल. ठीक है. ये इंटरबायोलॉजिकल क्या होता है कि डिफरेंट पर्सन सेम करना सेम स्क्रीन टेस्ट सेम इंडिविजुअल पे सेम ये कर रहा है अलग रिजल्ट आ रहे हैं. तो इसमें क्या है इंटेंसिव ट्रेनिंग करवाना है एंड प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर्स. उसमें जो इंटेंसिव ट्रेनिंग करवाना है नीचे जो है इन द ऑब्जर्वर मतलब इन बिटवीन द ऑब्जर्वर वेरिएशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसीजर एक तो करवाना है एंड इंटेंसिव ट्रेनिंग करवाना है. ठीक है. फिर बायोलॉजिकल वेरिएशन इज उसमें क्या होता है वेरिएशन ऑल्सो रिपीटेबिलिटी हो रहा है. हाँ उसमें क्या है कि चेंजेस इन द पैरामीटर्स इट इज ऑब्जर्व. तो चेंजेस इन द पैरामीटर्स इट इज ऑब्जर्व वेरिएशन इन द वे. तो changes in parameter which is observed not parameter is survivals more taken from the same woman maybe normal and then abnormal body. So survivals more which is taken from the same woman maybe normal one day or abnormal one day. So changes in the parameter which is observed. So changes in the parameter is observed is survivals more which is taken from a woman maybe normal one day or abnormal other day. तो इसके बाद आता है वेरिएशन इन द वे पेशेंट परसीव द सिम्टम्स एंड आंसर. तो फिर इसके बाद आता है वेरिएशन इन द वे द पेशेंट परसीव द सिम्टम्स एंड देन आंसर. तो इसमें एरर्स इन रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स है व्हेन अ क्वेश्चनर इज एडमिनिस्टर्ड. तो देयर इज एरर्स इन रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स व्हेन गिवन अ क्वेश्चनर. ठीक है. एंड देन उसके बाद आता है रिग्रेशन टू द मीन दैट इज टेंडेंसी फॉर वैल्यूज एट द एक्सट्रीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन either very low either very high to regress towards the mean. जो टेंडेंसी होती है of the value which are at extreme distribution, extremes of distribution. So if there are values of the extremes of the distribution then there is tendency to regress which are mean की तरफ, either very high or very low to regress towards the mean. So tendencies of values of the extreme of the distribution either very high or very low may regress towards the mean or average on repeat measurements या फिर average. तो ये है बायोलॉजिकल वेरिएशन में तीन चीज़ें आ जाएगा. सबसे पहले चेंजेस इन द पैरामीटर्स ऑब्जर्व, फिर चेंजेस इन द वे परसीव द सिम्टम्स एंड आंसर एंड देन रिग्रेशन टू द मीन.
ये चेंजेस इन क्लाइमेट ऑब्जर्व नहीं किया है कि 7 अगस्त में कौन का एक दिन नॉर्मल आ सकता है, एक दिन अबनॉर्मल आ सकता है. इस बार चेंजेस इन द वे पेशेंट may perceive their symptoms and answer. So either again recollection of past event when given a questionnaire हो सकता है. And then relation to community, to explain of the values of distribution होती है. You have a tendency to regress towards the mean. With either they can be very high, very low, but then regress towards the mean. मतलब average on repeat values, on repeat measurements वो average की तरफ आ जाएगा. ठीक है. इसका एरर्स ड्यू टू टेक्निकल मेथड्स होता है. तो एरर्स ड्यू टू टेक्निकल मेथड में क्या है कि डिफेक्टिव मशीन या फिर प्रोसीजर. तो यहाँ तो जो मशीन है या प्रोसीजर है उसमें डिफेक्ट है, फिर कैलिब्रेशन नॉट डन करेक्टली, या फिर फॉल्टी रिएजेंट्स इज यूज्ड और टेस्ट को भी फॉल्टी, और द टेस्ट में भी इटसेल्फ अनरिलायबल और इनअप्रोप्रिएट. सो डिफेक्टिव मशीन या कैलिब्रेशन नॉट डन प्रॉपरली, अनरिलायबल टेस्ट है, डिफेक्ट इन द रिएजेंट और टेस्ट इटसेल्फ, या फिर टेस्ट ही अनरिलायबल या फिर इनअप्रोप्रिएट है. ओके, सो डिफेक्ट इन द मशीन. सबसे ज़्यादा डिफेक्ट इन द मशीन या प्रोसीजर है, फिर कैलिब्रेशन इज नॉट डन प्रॉपरली, फिर उसके बाद कैलिब्रेशन नॉट डन प्रॉपरली, देन faulty reagents may be used, and test result itself may be inappropriate. Test may be itself inappropriate or unreliable. Overcome by calibration of equipment. Calibration of equipment से overcome हो सकता है. Changes in the parameters observed, changes in the way perceive their symptoms, and then answer to the questionnaire. And the third is validity is nothing but accuracy होता है. So it means close to or to the actual value. So close or to actual value. So ability of test to separate correctly those who have the disease from those who don't have the disease. ठीक है. Closeness to the actual value of true value is ability of the test to identify correctly those who have the disease from those who don't have the disease. To implement data sensitivity and specificity. Sensitivity, ability of the test to correctly identify those who are with the disease, and specificity is ability of the test to correctly identify those who are without the disease. उसका एग्जाम्पल में क्या है कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज मोर हायर देन यूरिन फॉर शुगर. सो ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज मोर हायर देन यूरिन फॉर शुगर. Observed variation can be checked at the same time. Biological variation can be tested over time by repeat measurement over time. तो observed variation जो है वो repeat measurement same time पे करना है, and biological variation is over time करना है. Lag time क्या होता है? It is the difference, magnetic difference between first possible point of diagnosis. किसको पूरा डायग्नोस कर नहीं सकता. फाइनल क्रिटिकल पॉइंट है यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस.
usual outcome of the disease. Usual outcome of disease. These outcome to be expected when the disease is detected at the earliest possible moment. The outcome to be expected when the disease is detected at the earliest possible moment. So BA is benefit of program. बेनिफिट ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी ज़्यादा आउटकम इसके अंदर लिखना होता है. यूजुअल आउटकम ऑफ डिसीज डिसीज इज डिटेक्टेड एट द अर्लीस्ट पॉसिबल बेनिफिट ऑफ प्रोग्राम. टाइम पीरियड बिटवीन डायग्नोसिस है early detection, usual time of diagnosis. Period है between diagnosis by early detection, usual time of diagnosis. The period will be the first possible point of diagnosis and usual time of diagnosis.